Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis session. आज सेशन में आम लास्ट वीक रो पांचटा इंपोर्टेंट एडिटोरियल ऊपर डिस्कशन करबा आमे. सो लास्ट टाइम ए टॉपिक मानक ऊपर मु डिस्कशन करथली लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन एयरपोर्ट, ब्रिक्स समिट, स्टेट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, स्टेम रिसर्च, पिक्चर ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया, इंडस वाटर ट्रीटी, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो आज टॉपिक रे आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करबा. लास्ट वीक रा मंडे रु सैटरडे भितर जहाँ जहाँ एडिटोरियल एनालिसिस थिला. रिसर्च सिक्योरिटी, इंडिया cities and non-communicable disease burden, citizens with disabilities and their rights, why do developing countries need finance from climate change, then states and the challenge before the finance commission. ये हला important topic. यार ऊपर आज discussion confine करिवो. Before starting the topic, let's have a look into why current affair is important for us. आपको हमें कहीं की पढ़िवा दरकार. It is required both for prelims as well as mains. कौन पाइंटा दरकार? This is required both for prelims as well as mains. ये दीटा पाई हमरो importance रहिछि. Prelims रे जदि हम देखिबा MCQ मध्ये थ्रू अनेक आंसर आसुछि. Mains रो most of the question current affair based question. आपनकर GS1 हो, GS2, GS3, इवन केस स्टडी GS4 रो एथिक्स रो मध्ये करंट अफेयर बेस्ड आजिकली आसुछि. एथि पई ए पर्टिकुलर ताको तो सब्जेक्ट कहबिनी बट प्रत्येक सब्जेक्ट रे करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करिवार आवश्यकता पड़ी थाए. नाउ व्हाट आर द सोर्सेस? द हिंदू, EPW, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, वर्ल्ड फोकस, फ्रंटलाइन, साइंस रिपोर्टर. दीज आर सोर्सेस जो सोर्स को हमें पढ़िवा दरकार. बट इन जनरल इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ कैंडिडेट टू फॉलो ऑल these sources and to have a very comprehensive notes. That's why I will recommend just go through the Hindu editorial analysis at least. डेली बेसिस रे निजे एडिटोरियल को पढ़ंतु, तार गोटे नोट्स तैयारी करके निज पाखर रखंतु. आईआर पई इंडियन एक्सप्रेस रो एडिटोरियल पढ़ी परिबे. देन एठी जानिबा दरकार कि को पॉइंट को हमें एडिटोरियल ले फोकस करबा एवं को पॉइंट को हमें स्किप करबा दरकार. पॉलिटिकल न्यूज़, रिमार्क्स, लोकल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, डेथ, अवार्ड्स, एई रिलेटेड न्यूज़ को हमें स्किप करबा. ताले को पॉइंट ऊपर हमें फोकस करबा. नाउ वी शुड टू फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन. ये इश्यू को पढ़िया भलो भाबरे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जदि किछि आसीछि, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर जदि किछि वर्डिक्ट अछि, सिक्योरिटी इश्यूज बा गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज लाइक फाइनेंस कमिशन ऊपर आज गोटे डिस्कशन अछि. ये सब सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, vulnerable section like SC, ST, then OBC, ये सब ऊपर पढ़िवा दरकार. आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन ने इंडिया रा बायलैटरल एवं मल्टीलैटरल रिलेशनशिप को डिस्कस करबा दरकार. तेणु एटी गोटे एडवाइस देबी, समस्त सिलेबस को प्रॉपर्ली जानंतु. GS1 2 3 4 रो सिलेबस कोन अछि, माइक्रो सिलेबस, तार गोटे नोट्स बनै कि निज पाखर समस्त रखन. नाउ लेट्स हैव द डिस्कशन. आज रो फर्स्ट टॉपिक अछि रिसर्च सिक्योरिटी. सो रिसर्च सिक्योरिटी शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी. जदि हमें देखिबा इंडिया रो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ना कहै छै विकसित भारत बाय 2047. इस जगह the government emphasizes on the role of science and technology because without development in the field of science and technology a country cannot be called as developed. I will give you example of Japan. ये एशिया रो एमिति गोटे कंट्री जोटी existence of natural resource is very less as compared to India or any other country, but because of development in the field of science and technology Japan has a tag of developed country. India is a developing country but Japan is a developed country. कौन पाई? because यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी ई पार्ट बा इथे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जदि हम कहबा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जदि हम कहबा, दिस इज वेरी स्ट्रांग हैला. देन इन्वेस्टमेंट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज दैट इज एसेंशियल्स टू स्टे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस, टू अनलॉक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. सो अदर कंट्री मानक भली इंडिया इज आल्सो बिल्डिंग एन इनोवेटिव इकोसिस्टम टू हार्नेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज. सो इट रिसर्च एंड डेवलपमेंट रो एई कारण पय हमको अधिक रो अधिक आवश्यकता पड़े. नाउ लेट्स लुक इनटू व्हाट इज रिसर्च सिक्योरिटी. ये जो पॉइंट अछि एठी रिसर्च सिक्योरिटी कहला हम कोन बुझु छै. हियर वी टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज. एंड रिसर्च सिक्योरिटी इट इज एसेंशियल इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट रिसर्च लैब्स, गवर्नमेंट एजेंसीज टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेंसिटिव डाटा and innovative methodologies. So research security it addresses emerging challenges like cyber threat, data breach, insider risk. These are the
very basic objective of research security ए जगह में ethics integrity को maintain करूचे प्लस साइबर थ्रेट डाटा ब्रीच ये सब को मध्य आखि आगे रखुचे एटी रिसर्च सिक्योरिटी रो मु डेफिनेशन पाई बर्तमान देखिबा रिसर्च सिक्योरिटी रो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च सिक्योरिटी फर्स्ट होची डाटा सिक्योरिटी नाउ डाटा सिक्योरिटी काहे की दरकार हम देखिबे रिसेंटली डाटा ब्रीच रो न्यूज़ बारंबार आसुच इंडिया रे डाटा ब्रीच वर्ल्ड रे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानकर डाटा ब्रीच आई थिंक रिसेंटली मेटा बा जब फेसबुक होचे फेसबुक रे डाटा ब्रीच थिला आईसीआईसीआई बैंक रे मध्ये हमको डाटा ब्रीच देखिया पय मिलिथिला सो एटी डाटा सिक्योरिटी कोन करूची बार ऑब्जेक्टिव कोन बार ऑब्जेक्टिव होची सेंसिटिव रिसर्च डाटा को प्रोटेक्ट करबा हला लाइक प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन पेटेंट डाटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये सब को प्रॉपर्ली स्टोर करबा बा ताको एनक्रिप्ट करके स्टोर करबा एनक्रिप्शन माने ओटे किछि कोड थिबो जेमति लॉक टाइप रो सिस्टम जेमति ताको easily okay there's not been any unauthorized access to that particular data that's why encryption is required and the second is intellectual property protection eti kon hoye in intellectual property protection here will protect innovation and discoveries kon kariba am eti will protect innovation and discoveries so patents trade secrets याको हमें प्रोटेक्ट करिया फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट then there should be legal framework and confidentiality agreement कौन कहली there should be legal framework and confidentiality agreement then it ethical research compliance ethical standard हम एठी मेजर करबा लाइक एनिमल स्टडी सेंसिटिव टॉपिक जदी किछ अछि बा ह्यूमन सब्जेक्ट को केमति हमें कंसीडर करबा सो जीडीपीआर जो डाटा प्रोटेक्शन रूल अच्छी जीडीपीआर रूल को केमति हमें इनकॉर्पोरेट करि परिबा जीडीपीआर ऊपर हम सेपरेटली डिस्कस करिवे इंडिया रे मध्ये डाटा प्रोटेक्शन बिल आस्तिला जानथियो समस्ते फिजिकल सिक्योरिटी रे हम एठी देखछे जोडा डाटा सेंटर जोटी डाटा स्टोर होउची जोडा का लैबोरेटरी हला जोडा का रिसर्च फैसिलिटी जोटी अछि ताको हमें केमति प्रोटेक्ट करिवा सो इट इन्वॉल्व्स आईडी कार्ड सिस्टम लाइक सीसीटीवी सर्वेलेंस बिना आईडी कार्ड रे कहार एंट्रेंस कहार एंट्री एग्जिट हे परिबन सीसीटीवी सर्वेलेंस रहबा दरकार बायोमेट्रिक एक्सेस रहबा दरकार है ये सब फिजिकल सिक्योरिटी थर्ड इज द इनसाइडर थ्रेट मैनेजमेंट एठी हमें बेसिकली कौन करछे इनसाइडर थ्रेट रो अर्थ होची थ्रेट बाय एम्प्लॉइज और कोलैबोरेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विथ एक्सेस टू सेंसिटिव रिसर्च इट रिक्वायर्स रेगुलर बैकग्राउंड चेक मॉनिटरिंग एक्सेस लॉग्स कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब करबा होची यार बेसिक ऑब्जेक्टिव सो एठी हम कोन देखिले दिस इज ऑल अबाउट इनसाइडर थ्रेट मैनेजमेंट देन रिसर्च सिक्योरिटी व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस को जगह रे हमको प्रॉब्लम देखिया पय मिलुची प्रथम हला साइबर एस्पियोनेज रे कोन हुए एठी बोथ स्टेट एंड द नॉन स्टेट मींस दोज हु डोंट बिलोंग टू द गवर्नमेंट एमाने कोन चाहंती समानकर टारगेट होची रिसर्च इंस्टीट्यूशंस व्हाट फॉर टू एक्सेस सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लाइक फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी बा जति हम देखिबा हाई प्रोफाइल साइबर अटैक हेतला कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च जेतरो कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च चली थिला वैक्सीन पब्लिश सारी नथिला बाहर को आसी सारी नथिला सेतेबेले मध्ये या ऊपर साइबर अटैक हला देन क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन रिस्क रे कोन हम जे देखिबा इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन रिसर्च international partnership is required this is important and it can expose institutions to differing legal system and risk of intellectual property theft intellectual property ऊपर मध्ये हमर सेपरेट क्लास अछि सेटा हम क्लियरली सब जिंस डिस्कशन करि एटी कहली क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन रिस्क जेतबेले होउची जदि कि इंटरनेशनल पार्टनर रुहंती ताले इंटरनेशनल पार्टनर रे प्रॉब्लम कोन हो ना लॉ गुडा को डिफरेंट हो जाए लेट्स से इनसाइड इंडिया दीटा कंपनी कोलैबोरेट करछंती सो इंडियन जुरिसडिक्शन और लॉ अंडर समान आछन लेट्स से रिलायंस और टाटा कोलैबोरेट करले सो दे विल बी सब्जेक्ट टू द इंडियन लॉज नाउ जेतो व्हेन इंडियन कंपनी कोलैबोरेट्स विथ एन इंटरनेशनल कंपनी एटी प्रॉब्लम कोन है देयर आर इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दोस बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द एंटायर सिस्टम तो ए जगह रे क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन ने अनेक अंश हमको रिस्क देखिबा को मिलता है थर्ड इज ओपन साइंस एंड सिक्योरिटी ओपन एक्सेस टू रिसर्च प्रमोट्स कोलैबोरेशन increases the risk of exploitation by the malicious actors so एटी जेतलो when we make it open or openness with the security measures that remains a significant challenge ये तीनटा हला emerging challenge research security ताले research security पई what should be the strategy हम पाखरे proper strategy कोन रहबा दरकार प्रथम दरकार हमको comprehensive security policy एटी हमें कोन करबा I will develop and enforce clear policies addressing data classification access control cyber security protocol regular training and awareness darkar to educate researchers to educate staffs
about recognizing and mitigating security threats. Partnership with cyber security experts. We have to collaborate with cyber security firms, government agencies. हम एटी partnership करि परिबा. Secure platform आम यूज करि परिबा. Adopt secure cloud service, collaboration tools, end-to-end encryption यूज करि परिबा sensitive research data को store करिया पई. Incident response plan. एटी will have procedures for responding to data breaches or unauthorized access, including containment, reporting and recovery. ए related response हमको करिया दरकार जदि हमें research system रे complete protection चाहूँ. ताले ग्लोबल एफर्ट कौन कौन अच्छी एपर्यंत रिसर्च सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया पे. फर्स्ट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी एनआईएसटी. एटा यूएस रे अछि. ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करछि टू प्रोटेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट. देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाइक TRE, ट्रस्टेड रिसर्च एनवायरनमेंट. एटा यूके रे अछि एंड इट प्रोवाइड्स सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर हैंडलिंग सेंसिटिव रिसर्च डाटा व्हिच कंप्लाइज विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स. ये सब लीगल रिक्वायरमेंट मध्यटी confirm करूछि. So these are global efforts. So माबुते research security related जहाँ भी concept ऊपर हमें discussion कले, everyone is clear with this, समस्या को बुझी पारले. तापर हमें next topic को जिबा. Next important topic, second topic को जिबा आजिरो. India cities, they are non-communicable disease burden. India रे जो urbanization हमको देखिया मिलुछि, there is high rate of urbanization समस्त जानते. अर्बन एरिया बा परसेंटेज ऑफ अर्बन एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होउची एवं परसेंटेज ऑफ रूरल एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज होउची. बट जदि हम वर्तमान देखिबा रूरल एरिया अधिक अछि एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, बट कन्वर्जन रेट हम कहली अधिक इंक्रीज होउची वर्तमान. सो ई सिटी मानकर ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डनटा ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जाउची. रिसेंटली बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन न जने बस ड्राइवर तांकर मृत्यु होइतिला कार्डियक अरेस्ट पर. सो जेतल से ड्यूटी रे थिले ऑन ड्यूटी तांकर डेथ हे गला. सो एठी डिस्कशन एंड डिबेट स्टार्टेड अगेंस्ट द पोर हेल्थ आउटकम्स इन आवर सिटी. समस्त जानि चंती बैंगलोर चेन्नई वाला जगह रे केमती वाटर क्राइसिस हो, दिल्ली रे केमती पोल्यूशन वर्तमान भी इवेन चलीछि. पोल्यूशन केते हाई रेट ऑफ पोल्यूशन से दुखने एयर क्वालिटी इंडेक्स केते हाई रहउछि. सो सिटी अर्बानाइजेशन तो होउछि, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सस्टेनेबल अर्बानाइजेशन लाइक गार्बेज गुड़ाक जहाँ रहा वेस्ट लैंड बढ़ी बढ़ी चलती, लैंडफिल्स, ये सब कारण मानक कौन हो ना डिजीज प्रिवेलेंस डिजीज रेट हमको अर्बन एरिया रे अधिक अधिक देखिए. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ दिस? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम होची पुअर इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज. सो इंडिया रे जदि हमें देखिबा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्वेलेंस पॉलिसी स्क्रीनिंग फॉर एनसीडी, एटा शॉर्टकट रे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम एनसीडी कहबा. ये कम्युनिटी लेवल ले रिस्क बढ़ाउछि. यार ऑब्जेक्टिव कोन? ये पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव कोन ना प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर फैसिलिटी. प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर फैसिलिटी. सो हेल्थ सिस्टम इन अर्बन एरियाज दे आर ओवरबर्डन, फ्रैगमेंटेड एंड ब्रोकन. So this is the function of a poor urban design and rapid urbanization. Rapid urbanization is good, but that should be sustainable one. Means that should be eco-friendly or that should be environment friendly. So with over half of the world's population living in urban areas, this figure is projected to reach 70% by 2050. And India's workforce is characterized by significant interstate migration. Approximately 14 million people moving between states, census 2011 data. So ये जो dynamic process रे जदि हमें देखिबा, it constitutes nearly 29% of the total migration rate. जदि हमें periodic labor force survey देखिबा 2020-21 रो, it highlights the fluidity of labor market. So sustainable portion of the urban population estimated at 49%. এটা হচ্ছে World Bank 2022 UN Habitat data. एमाने 49% they are living in the slum. They are living in the slum and they are living in a very low socio-economic landscape. ये डाटा सब मन रखिबे एवं डाटा को यूज करिबा आंसर लिखला बेले. Now come to the health burden in urban India. अर्बन एरिया रे जो अर्बन कम्युनिटी अछंती, दे आर फेसिंग तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ रेट मु डिस्कस करी. फर्स्ट ला hazardous work environment, सेकंड लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस, थर्ड इज द फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस. कोन कोन कहले hazardous work environment. जो प्लेस रे माने काम करचंती एटा hazardous हो जाउची. काहे कि बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट बा एटी जेहेतु क्लाइमेट चेंज होउची, एनवायरमेंटल इंपैक्ट अधिक रो अधिक पड़ुची. सेकंड इज लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस. एमान को हेल्थ केयर सिस्टम को एमान एक्सेस करि पनंदे. व्हाई?
ना अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करिया पई उनको अधिक रु अधिक जो फंड दरकार बा फाइनेंस दरकार ये फाइनेंस सेमान पाखे अवेलेबल ना देन फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी कथा मु ऑलरेडी कहि सो ये तीनटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी नाही फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नाही एवं हाजर्डस वर्क एनवायरनमेंट यदि हमें एनएफएचएस रो डाटा देखिबा इट शोज अ डिक्लाइन इन टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन फ्रॉम 2005-6 टू 2019-21 सो दिस इज किसी सर्टन डिजीज रो नाम कहूची जोटा ए रीजन मान करना अर्बन ने अधिक रु अधिक देखिया एग्जांपल हाइपरटेंशन डायबिटीज ओबेसिटी ये सब अधिक देखा मिले सो जो एनसीडी हमें देखुचे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यदि हमें सिम्पटम वाइज देखिबा ना दे आर साइलेंट किसी सेमती विशेष करिया बड़ सिम्पटम्स हमको देखा जाए रादर हमको कौन दरकार ना रेगुलर स्क्रीनिंग दरकार रेगुलर स्क्रीनिंग करबा द्वारा हमें जानि परबा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमको अटैक करिछि ना करि नाही अदरवाइज इफ इट इज अनट्रीटेड लाइक हाइपरटेंशन डायबिटीज ओबेसिटी this will lead to certain critical healthcare issues ताले देखिए कि अर्बन हेल्थ प्रोब्लेम कौन अच्छी प्रथम है एयर पोल्यूशन अर्बन एरिया रे जदि हेल्थ इश्यूज बढ़ुची देन व्हाट आर द कॉजेस यही आसीबो क्वेश्चन तो को कारण मानक पई अर्बन एरिया रे हेल्थ इश्यूज बढ़ी बढ़ी चली फास्ट होची एयर पोल्यूशन समस्त जानि चंती यार बेस्ट एग्जांपल होची दिल्ली दिल्ली व्यतीत अदर अर्बन एरिया वर्ल्ड रे देखिबा लॉस एंजेलिस बेजिंग एटी hazardous air quality level हमको देखिए there is severe air pollution because of vehicles industries construction sites एटी particulate matter 2.5 and 10 देखिए मिले nitrogen dioxide sulfur dioxide it increases the risk of respiratory disease cardiovascular conditions and lungs cancer ये सब क्रिएट करता है एयर पोल्यूशन सेकेंड वन इज वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज जदि हम देखिबा एटी ओवर क्राउडिंग एवं इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर facility देखिए मिले it leads to poor access to clean water and sanitation contaminated water contributes to disease like cholera diarrhea hepatitis A ये सब हमको देखिए मिले मोस्टली दिल्ली टाइप सिटी रे देखिए जोटी contaminated water अधिक मिले ना एई वाला डिजीज cholera diarrhea and hepatitis A अधिक देखिए मिलता है सो अर्बन लाइफस्टाइल जदि हम देखिबा अर्बन सेडेंटरी बिहेवियर अनहेल्दी डाइट स्ट्रेस increasing rate of diabetes obesity hypertension mental health disorder इति बढ़ी बढ़ी चलछि काहे ना urban area is more or less related to capitalism now capitalism is all about materialistic form of life they never focus on gross national happiness rather they focus on increasing GDP or increasing quantitative development as हम कहबा only quantitative aspect of growth is there development is also there qualitative aspect like healthcare education is there but people look into the GNH factor gross national happiness factor this is very less in urban areas so urban area रे ये जो lifestyle अछि ना ये lifestyle ही hypertension mental disorder diabetes obesity create करूछि एटी लोक एते सोशल नुहंती एटी गां मानकर देखिबे समस्त गोटे गां रे जदि किछि प्रॉब्लम हुए आख पाख अनेक गां रे लोकन जणाथि बट अर्बन एरिया रे पाख गां रे पाख घरे किछि असुविधा हले ना साइड घर लोक को मध्य जणा नथाय जनाउ कोन इन्फेक्टियस डिजीज तो जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रहिबो एवं पोर लिविंग कंडीशन रहिबो सेठी इन्फेक्टियस डिजीज गुडा को बढ़िबो लाइक टीबी एचआईवी एड्स कोविड-19 समय रे देखिबे ओटा कोठी अधिक अर्बन एरिया रे कोविड-19 टा अधिक स्प्रेड एज कंपेयर टू रूरल काहे कि रूरल रे पॉपुलेशन डेंसिटी कम लोक मानकर जदि हमें आइसोलेशन रे रखिबा देन दे विल बी देयर इन आइसोलेशन so जोटा slum area अच्छी slum areas with inadequate waste management they are breeding grounds for vector borne disease like dengue malaria ये सब क्रिएट होची then most important factor एठी मु कहली mental health challenge एठी जेहेतु से माने सोशेबल नुहंती स्ट्रेस अधिक बढ़ता है ओवरक्राउडिंग पई स्ट्रेस इज देयर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हला फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफस्टाइल माने बहुत काम करबा एट ए टाइम बा वर्क ओवरलोड नबा it leads to anxiety depression substance abuse then there is also lack of access to mental health services को मध्ये access नाही then the next is traffic accident and injury urban area रे inadequate transportation planning ପାଇଁ there is high rate of road traffic accidents which results to high rate of injuries as well as fatalities then housing and living condition हमें already जाने कि एटा overcrowding area there is unsanitary condition so there is exposure to hazards like fire building collapse homeless population they are especially vulnerable to extreme weather malnutrition health complications ये सब हमको एटी देखिया को मिलछ then urban heat island and climate change जोटा हम देखुछ urban heat island
It causes by excessive concrete and lack of greenery. इटी ग्रीनरी नाही जेहेतु टेम्परेचर इंक्रीज होउची एवं केवल कंस्ट्रक्शन साइट अछि हमको एटी कोन को जाको क्लाइमेट चेंज पय याको अर्बन हीट आइलैंड बोली कहउची हैला या ताले यार यार हु आर द विक्टिम आउट ऑफ इट ना जो माने vulnerable population like the elderly, the poor people, those who are socio economically backward हैला सेमाने सब यार विक्टिम हेता. Then occupational hazards जदि हम देखा informal sector basically ସେମାନେ unsafe working condition देखती like exposed to toxic chemical, heavy machines, repetitive stress, injury, or they are exposed to climate change. Just think about the delivery boys, think about the rickshaw pullers, auto drivers. They are more vulnerable to climate change and they are more exposed to different type of occupational hazards. Now ये urban area रे urban health issue को address करिया पई हमें कौन एटी स्ट्रैटेजी ही पारे व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अर्बन एरिया रे हेल्थ अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करिया मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होची एटी वी हैव टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया पड़े फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम को हमको बढ़िया पड़े लाइक नंबर ऑफ डॉक्टर्स नर्स पैरामेडिक्स हैला ये सब नंबर कौन करिया पड़ियो हमको ना इंक्रीज करिया पड़ियो प्रमोटिंग एनवायरमेंटल हेल्थ कौन एटी करिया दरकार ना एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रमोट करियो ता माने वी हैव टू कॉम्बैट विथ क्लाइमेट चेंज हैला देन इंप्रूविंग वाटर एंड सैनिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वाटर एवं सैनिटेशन को हमको डेवलप करिया दरकार हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करिवा वी कैन प्रैक्टिस योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज ये सब को इंक्लूड करि परिवा स्मार्ट अर्बन प्लानिंग सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी देयर कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ही परियो सो दीज आर द सॉल्यूशन टू अर्बन हेल्थ इश्यूज सेकंड टॉपिक क्लोज थर्ड टॉपिक को आसीबा सिटीजन्स विथ डिसेबिलिटीज मेकिंग देयर राइट्स रियल एरा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आपनकर जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस समस्त पढ़िथिबे सोशल जस्टिस रु ए टॉपिक ता अछि सो 2011 सेंसस अनुसार जदि हम देखिबा पर्सन विथ डिसेबिलिटी बा जहा को हम पीडब्ल्यूडी कहउते यार परसेंटेज केते ना 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2019 ब्रीफ डिसेबिलिटी मॉडल सर्वे अनुसार 16% prevalence of severe disability among Indian adults is there. Now, control kariya pai, what are the steps which has already been taken by India? And there is UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD 2007. So there is national law, India all the national laws, they are aligned as per the different provisions of this convention. Second is the Rights of Persons with Disability Act 2016. It replaced the 1995 Act to promote a social and human rights model of disability rights. So disability violates human rights. This is a condition where human rights of a person is completely violated. So what are the challenges in functioning of State Commissioner for Disabilities? Pratham important point hochi appointment related issue. So delay in appointment. State Commissioner appointment re delay, impartiality. Civil servants from the nodal ministries, they are often appointed, leading to concern about bias and lack of independence. Civil servant मान को ही ये दायित्व commissioner रा दायित्व दिया जाता है. So many times transparency देखिए आपको मिली ना था, बा governance रे हमको ethical governance इति देखिए आपको मिली ना था. Then is non-utilization of powers. This is limited suo motu intervention. कौन कहली non-utilization of powers, limited suo motu intervention. So there is a lack of proactive action by the state commissioners to address discriminatory policies, weakening their role in safeguarding disability rights. There is trust erosion as well. Inactive use of powers, which contributes to a decline in public trust in the effectiveness of the office. People believe that there is a government office, but the government office कौन करे ना लोक मान को जति कैटर करवा कथा बस मान ट्रस्ट अनुसार जहाँ करवा कथा से जिनसटा प्रोवाइड करि पारे नाही. So there is non utilization of power हमें कहि पारे. Then is capacity constraint. Capacity constraint रे सबटु important होची inadequate training.
जो माने स्टेट कमिशनर से पाखे सफिशिएंट ट्रेनिंग न था माने क्वासी जुडिशियल बॉडी एमान को ट्रेनिंग मिल न था से माने अलगा कौन से बैकग्राउंड आसिक एंटर करता then is additional charges commissioners frequently have additional responsibilities diverting focus from their primary duties right? So primary duty होची protecting disability right एमाने disability rights को protect न करी additional charge रहता there is absence of independent office absence कौन because there is lack of a separate dedicated office which hampers the independence and effectiveness of the commissioner's role so independent office सेठी हमको देखिया को मिले नहीं there is lack of leadership और हमें कहि परिबा absence of strong focused leadership affects the overall functioning and impact of the office so जो स्टेट कमिशनर को ऊपर हमें पढुते स्टेट कमिशनर को गोटे इंपोर्टेंट की फंक्शन कोन ना टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स so तो रिसर्च बढ़िबो डिसेबिलिटी राइट रे ये कौन करियो ना इट विल ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टेट कमिशनर्स टू कोलैबोरेट विथ यूनाइटेड नेशंस एंटिटीज which have a mandate to promote disability inclusion on the basis of UN disability inclusion strategy. So our objectivity कौन कहली ना including or inclusion of these disabled persons na in terms of policy formulation, policy implementation, so that they will not feel that they are excluded from the government's developmental policies. ये गला थर्ड टॉपिक और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक फोर्थ टॉपिक को आसीबा why do developing countries need finance for climate change developing country मान को फाइनेंस काहे की दरकार क्लाइमेट चेंज पाए इटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी लास्ट क्लास रे बोधे मु क्लाइमेट जस्टिस ऊपर डिस्कशन कर क्लाइमेट जस्टिस रे जनरली ये कोन जदि हम देखिया जो माने रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी बा जो माने डेवलप्ड कंट्री बा जो गुडा को अर्बन एरिया एमाने अधिक रु अधिक एनर्जी यूज करछंती बा क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करछंती बट क्लाइमेट चेंज हैला परे यार इंपैक्ट रिच मानकर अधिक इंपैक्ट का ऊपर पडुची ना पडुची पोर ऊपर रिच माने यूज कले पोर ऊपर पडिला इंपैक्ट डेवलप्ड कंट्री माने यूज कले पडिला का ऊपर ना अंडर डेवलप्ड कंट्री मानक ऊपर इंपैक्ट का ऊपर ना अंडर डेवलप्ड कंट्री मानक ऊपर अर्बन एरिया यूज कला इंपैक्ट पडिला अधिक का ऊपर ना रूरल ऊपर अधिक इंपैक्ट पडिला बुझियला सो क्लाइमेट जस्टिस कोन अब देखिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूशन किछि सेक्शन न अधिक एवं तार इंपैक्ट आउ कहा ऊपर पडुछ येला क्लाइमेट जस्टिस तो एक्जेक्टली एठी हमर डिस्कशन होची डेवलप्ड एवं अंडर डेवलप्ड कंट्री जो माने से माने क्लाइमेट चेंज करूछंती अधिक बट तार कॉन्सिक्वेंस पडुछ अधिक डेवलपिंग बा अंडर डेवलप्ड कंट्री मान को समस्त जानि चंदी देयर इज COP29 जोटा बाकू रे हेतिला बाकू आजबेरिजा यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जाको कुआ जाय एठी या पर मु डिस्कशन मध्ये करिछि पूर्व क्लास मान करे ए एडिटोरियल एनालिसिस रे करिछि एठी गोटे आसला कोन न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG कोन पई ना फॉर क्लाइमेट फाइनेंस सो एठी हमें देखिबा ए पर्टिकुलर एडिटोरियल कहा ऊपर डिस्कशन करूची जो NCQG कोन एवं यार क्लाइमेट नेगोशिएशन कोन यार ऊपर डिस्कशन करूची तो डायरेक्ट पॉइंट को आसीबा हमें कि डेवलपिंग कंट्री मान को फाइनेंस रा आवश्यकता काहे क्लाइमेट चेंज विरुद्ध लड़िया पई प्रथम कथला अपफ्रंट कॉस्ट फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी कोन ना जहार एनवायरनमेंट ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट कम पड़े ताको क्लीन टेक्नोलॉजी कहन बा जोडा को बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एनर्जी ए सोलर एनर्जी को यूज करबा ना बा ताको इंस्टॉल करबार कॉस्ट आ सबले हाई कॉस्ट हला देयर इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट बट देयर इज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट there is long term benefit but there is high initial investment then there is also financial gap and urgency there is debt issue and risk kon kohili there is debt issue and risk there is high cost of capital cost madhya high international support madhya आवश्यकता अछि काइना जोडा डेवलप्ड कंट्री से मान हमको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करियो बिना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रे एटा डेवलप होई परिबो नाही इटी खाली डायरेक्ट पॉइंट कहि देली काहे कि डेवलपिंग कंट्री मान को फाइनेंस दरकार फॉर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट जस्टिस ऊपर एवं पर्टिकुलर टॉपिक पर मु पूर्वरु क्लास करिछि एडिटोरियल रे पूर्वरु आस्थिला हम डिस्कशन करिछि सो एठी आ अधिक डिस्कशन करू लास्ट टॉपिक को आसीबा स्टेट्स एंड चैलेंज बिफोर द फाइनेंस कमिशन ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक सो 16th फाइनेंस कमिशन कहले व्हिच वाज चेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट अरविंद पानिगरिया इन तमिलनाडु ये कहले बा ये कहा पर डिस्कस कले ना रिलेटेड टू द करंट फिस्कल चैलेंज इंडिया कौन फेस करूछ ना हमें जानिचे कि इंडिया वर्तमान फेस करूछ इश्यू रिलेटेड टू फेडरलिज्म कहां पर इश्यूज रिलेटेड टू
फेडरलिज्म रे एठी कोन देखुछ हमें ना देयर इज टू गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट बा जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहूचे आ गोटे देखुछ स्टेट गवर्नमेंट आ गोटे कोन देखुछे स्टेट गवर्नमेंट नुहे कि गोटे ला यूनियन गवर्नमेंट आ गोटे ला स्टेट गवर्नमेंट बुझिला या भितर डिस्प्यूट विभिन्न एंगल रोचे बट आज डिस्कशन स्पेशली क्या अछि ना फिस्कल फेडरलिज्म ऊपर फिस्कल फेडरलिज्म कोन ना ये यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को जो ग्रांट करिवो केते ग्रांट करिवो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को जो ग्रांट करिवो केते ग्रांट करिवो सो ए पर्टिकुलर इश्यू को लेके व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इट जो 16th फाइनेंस कमिशन है सी देखले कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी particularly in case of relocating supply chains to the allied countries बा जा को जाउची कोन फ्रेंड शोरिंग एंड रीशोरिंग कोन ना ब्रिंगिंग प्रोडक्शन बैक टू होम कंट्री रे प्रोडक्शन करवाटा हला रीशोरिंग फ्रेंड शोरिंग कोन ना रिलोकेटिंग सप्लाई चेन टू द allied countries इंटरनेशनल ट्रेड रे ए जो चेंजेस हमको देखिया को मिलची जो शिफ्ट हमको देखिया को मिलची बा एठी जो इन्वेस्टमेंट देखिया को मिलची इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया स्पेशली जो गुडा को इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट किए मुझे तमिलनाडु एडवांस कर्नाटका गुजरात ए स्टेट मानकु स्पेसिफिक बेनिफिट एठी मिल पारियो सो न्यू फिस्कल अप्रोच कौन और व्हाई देयर इज अ नीड फॉर न्यू फिस्कल अप्रोच फर्स्ट फाइनेंस कमिशन आसले 1951 एटी गोल थिला कोन ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एटी दी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन कथा आसे गोटेला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गोटेला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल कोन ना जोटा शेयर अछि allocating शेयर ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट हैला यूनियन और स्टेट भीतर एटा डिवाइड हो हॉरिजॉन्टल कोन ना रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दोस रिसोर्सेस अमंग द स्टेट्स एटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं अदर स्टेट्स लाइक ओडिशा तमिलनाडु तेलंगाना आंको अलोकेट करता हो एटी देखा जाउची हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ने कोन ना ओडिशा को केते हला महाराष्ट्र को केते हला गुजरात को केते हला आसाम को केते हला एठी हम कंपेयर करूचे व्हाट इज दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्टेट्स कोन कहली दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्टेट्स हला इला हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कथा सो दी प्रकार डिवोल्यूशन कहली मन रखियो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सो जो गैप एठी हमको देखिया को मिलुची कोउतरे ना बिटवीन द डिक्लेयर्ड गोल्स एंड आउटकम्स बिटवीन डिक्लेयर्ड गोल एंड आउटकम रे कोन मिलुची 15th फाइनेंस कमिशन कहले 41% ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल टू द स्टेट so actual devolution amounted to only 33.1% of the union's gross tax revenue past 4 year रे इधर 5 वर्ष अवार्ड पीरियड आता है 5 वर्ष रु 4 वर्ष रे हला केतना 33.16 तो जो शॉर्टफॉल हमें देखिले इट इज एट्रिब्यूटेड टू यूनियंस इंक्रीज रिलायंस ऑन सेस एंड सरचार्ज कुतरे कहली सेस आउ सरचार्ज ये पुनी गोटे सेपरेट टॉपिक यार डिस्कशन इकोनॉमिक्स क्लास रे एठी आउ डिस्कस करूनी एटा बढ़ी जियो अदरवाइज ताले एठी हमको दरकार कोन व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म डायरेक्टली मु रिफॉर्म पार्ट पस्ती जोटू क्वेश्चन आसीबो एठी हमको वी हैव टू एनहांस द स्टेट रो शेयर केते बा दरकार ना 50% ऑफ द ग्रॉस सेंट्रल टैक्स so gross central tax of 50% hele it will enable states to fund and implement schemes related to local needs it will reduce dependence on centrally sponsored schemes state ta nijara scheme ani paribo second is rethinking about the horizontal devolution so ए वर्तमान जो डिवोल्यूशन होउची एटा टिके बायस हेक अछि कहाड को ना जो गुडा को लीस्ट डेवलप्ड स्टेट बा जो गुडा को लेस डेवलप्ड स्टेट सेमाना काड टिके बायस हेक अछि एमान को अधिक ग्रांट मिलुची हला बट इट प्रॉब्लम कोन ना जो माने डेवलप्ड स्टेट सेमाने कोन कहबे कि आमे तो दउचु इनकम अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट को बट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करूची अधिक अदर स्टेट मानो तले हमर बेनिफिट कोन भाई ये जो क्वेश्चन आसीबो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीथिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन या परे गोटे डिस्कस इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऊपर मु लास्ट गत थर एडिटोरियल एनालिसिस रे पढैथिली सो हम सेकंड देखले कोन ना वी हैव टू रीथिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देन एड्रेसिंग यूनिक चैलेंज ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेट्स जो गुडा को प्रोग्रेसिव बा डेवलप्ड स्टेट लाइक तमिलनाडु सो डिस्पाइट देयर progress they face unique demographic and urbanization related challenges like demographic shift hela demographic shift kon na there is increase in aging population tamil nadu re so median age national average to adhik hoy gelani
consumption based tax revenue, increasing cost of supporting elderly, rapid urbanization एटी हमको देखिया को मिलची states urban population is projected to reach 57.3% by 2031 हैला national average केतना 37.9 only ताले एटी conclusion में हमें कौन लिखिबा ये टॉपिक ना एटा ट्रेंडिंग टॉपिक ये कंटिन्यू होबो बर्तमान तो एटा को अपडेट करी करी चलीबे एटा जो मन लेखचन खाता रे एटी 4 5 पेज छाडी देथिबे पुणी जेतोळे हम आगो को डिस्कशन करिवा नुवा इश्यू किछि आसिले सेठी इंसर्ट करिवा सो कंक्लूजन ने लिखि परिवा हमें व्हाइल दिस रिकमेंडेशंस एम्फसाइज empowering high performing states to maximize their growth potential, it is crucial to ensure that less developed states they are not sidelined. So these states require continued support to address structural challenges and to reduce disparity. तमाने ये कोची डेवलप्ड स्टेट माने ग्रो करिवे ता सहित अंडर डेवलप्ड स्टेट गुडा को साइडलाइन बा नेग्लेक्ट कर दिया न जाऊ एटाला कंक्लूजन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एटी जहां देइची ताको डायरेक्टली लिख परिवे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सेकंड पॉइंट कहले एटी एटा इमर्जिंग कंटिन्यू होबो तो आकु जागा छाड़िबे पुणी हमें आगु को लिखिबा हैला सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन हमें पांचटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आज डिस्कशन कले पुणी नेक्स्ट वीक रे एमती किछि इश्यू को नेकी हम डिस्कशन करिवा थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल